Yes, Ayush, and a very warm good evening to all our listeners. And the good news, of course, coming over here that India have won the first ODI very convincingly and comfortably, bowling out England completely for just 251 runs in 42.1 overs. I'm joined over here by senior sports journalist Chandrasekhar Luthra on the show. Good evening, Chandrasekhar Luthra ji. धन्यवाद. और उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जया शर्मा. Good evening, नमस्कार. Good evening, thank you. Happy news, I guess, in the studio and for all Indians over here. जया जी, आपसे शुरू करती हूँ. Of course, इस situation को आप कैसे देखते हो कि the Indians made a good comeback, or was it that the Englishmen gave the game away from a very commanding position at the start that they had? So I guess the match was a bit here and there in sometimes in India's favor, sometimes in England's favor, in patches, and certainly the way Johnny Bairstow took the onslaught there, it was going towards England's favor. But I think we made a good comeback, and again a fantastic win for India. और वहीं पर ना प्रसिद्ध होने के लिए आ गए प्रसिद्ध कृष्णा. 4 विकेट उन्होंने चटकाया. चंद्रशेखर, जिस तरह की गेंदबाजी, वो भी डेब्यू पे. मुझे अब ये लग रहा है कि इंग्लैंड की साइड जो है ना, वो फिलहाल जो करंट भारतीय स्क्वाड है उसके लिए बेस्ट है डेब्यू करने के लिए. देखिए, यंग मैन, नॉट सो यंग, 25, बट वेरी हाई आर्म एक्शन, गुड बिल्ट, गुड हाइट. आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट. And looking at his first game and looking at his confidence, I think he could be a replacement for Ishant Sharma when the time comes. So very exciting, I would say, debutant. Right, of course. और अगर एक चीज़ और देखें यहाँ पर, जिस तरह से इंग्लैंड ने पूरी पारी खेली, 135 पे उनका पहला विकेट गया, वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड पार्टनरशिप लूथरा जी, और उसके बाद उनके विकेट्स गिरने नहीं रुके. 137, 169, 175, 176, 217, 237, 239 और 241 और फिर 251 पे पारी सिमट गई. But that's been there, you know, entire series में अगर आप देखें, फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री, उसके बाद जिस तरह से पूरी तरह से सरेंडर किया. 5 T20 में अच्छी फाइट, लेकिन लास्ट मैच में बिल्कुल वन साइडेड. आज भी जैसे एक्साइटिंग लग रहा था शुरू में जब तक जॉनी बेयरस्टो थे उसके, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है पूरी सीरीज़ में इनके साथ यही प्रॉब्लम रही है कि अपनी कंसिस्टेंसी एंड स्पेशली द मिडल ऑर्डर जो इनका पूरी तरह से फ्लॉप रहा है. मैंने पहले भी कहा था, एक्साइटिंग हो सकता है कैप्टन का ना होना, कैप्टन का पूरा फिट ना होना, और वही दिखाते उनका पहले कैच छूटा और उसके बाद से फिर वो चले गए. तो यही एक प्रॉब्लम रही. बट ओवरऑल आई थिंक दिस लॉट टू गेन फ्रॉम दिस ओपनिंग एनकाउंटर, बिकॉज इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि उनके बॉलर्स ने किस तरह से बॉलिंग, कहाँ गलतियाँ की, कहाँ शुरू में रन खाए. उनको थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो अगले 2 मैचेस एक्साइटिंग हो सकते हैं. लेकिन जया, भारतीय टीम के लिए एक अच्छी चीज़ यहाँ ये भी हुई है कि आप देखेंगे दोनों ही इनिंग्स के अंदर पहले के 10 ओवर्स इंग्लैंड ने डोमिनेट किए थे, चाहे वो इंडिया की बैटिंग हो चाहे इंडिया की बॉलिंग हो. बट उसके बाद जिस तरह से इंडियन स्क्वाड का कमबैक, वो बहुत ही लाजवाब रहा. जी बिल्कुल. और जैसे विराट ने बोला, अपने इंटरव्यूज़ में भी बोल रहे हैं कि आप चाहे अपोजिशन आपको बैटिंग दे या बॉलिंग दे, आपको अगर टॉप टीम बनना है तो आपको हर कुछ ऐसा करना होगा कि आप एक टॉप टीम, बेस्ट टीम दिखें ग्राउंड पे. और आई थिंक फॉर दैट दे हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज टारगेट. जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप ने शुरू किया इंग्लैंड के लिए, वहाँ मुझे लगता है कि ऐसा लगा था T20 गेम चल रहा है. मगर जिस तरीके से कमबैक किया, एंड देखिए, जब 317 रन का टारगेट, 300 के ऊपर का रन का टारगेट, तो जब ऑपोजिशन खेलने आता है, और इंग्लैंड ने वही किया कि उनको वो रन रेट लेके आना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था. और जब आप इस रन रेट को चेस कर रहे होते हैं, तो नो डाउट जो ओपोनेंट होता है उनको डिफेंड करने के लिए काफ़ी चांसेस कम होते हैं, इतने जो रिदम में बैट्समैन खेल रहा होता है. लेकिन इंडिया kept themselves in the game and bowlers did the job for the Indian team. Yes, of course. हमारे साथ आई थिंक यहाँ पर एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, if I'm not mistaken. Yes, let's hear what our listeners come callers have to say. Hi, नमस्कार, good evening. नमस्कार मैम, गुड इवनिंग. मुबारक हो आपको. हम पहला ODI आज जीत गए हैं 66 रन के साथ. इनफैक्ट आई थिंक आप भी काफ़ी खुश होंगे. अपना नाम बताएं सबसे पहले. जी, मैं ग्राम पंचमापड़ा जिला शहडोल से संजू साहू बोल रहा हूँ. नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या कहना चाहते हैं आप हमारे शो पर, या क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल तो नहीं मैडम, लेकिन मेरे को मैच बहुत अच्छा लगा और कमेंट्री आपकी बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मेरे को टीम इंडिया जीत गई बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छा
मान पांड्या जो आज खेले वो बहुत अच्छा उनका बैटिंग लगा मेरे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू फॉर प्रेजिंग आवर टीम एंड ऑफ कोर्स हैप्पी पीपल हैप्पी कॉलर्स। जस्ट टू गिव अ रिमाइंडर ऑल्सो, आयुष, अपने कॉलर्स या लिसनर्स को हम बता दें कि हमारे दोनों फ़ोन नंबर्स इस समय एक्टिव हैं 01123421084, 01123421083। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे शो पर। और लूथरा सर के मोबाइल के बैक कवर पे जो फुटबॉल बनी हुई है ना, उससे मैं ये याद कर पा रहा हूँ कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, ओलंपिक आने वाले हैं। जो भी ऑल इंडिया रेडियो कवर करेगा तो उस पर भी आपको शोज सुनने को मिलेंगे, आप सुन सकते हैं सभी गेम्स की लाइव कमेंट्री, तो उसके लिए भी जुड़े रहिएगा। जया, आपको एक और सवाल से मैं जोड़ देता हूँ। सवाल बड़ा सिंपल है कि आप कुलदीप यादव को किस तरह आंकती है। मैं लूथरा साहब के पास भी आऊँगा, सेम क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को रिप्लेस किया था, युजवेंद्र चहल, लेकिन उस तरह की फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, जिस तरीके का आपके पास टोटल था इंग्लैंड के पार्ट पे, उस तरह की बल्लेबाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट था और वो काम उनके ओपनिंग पार्टनरशिप ने किया। और जब बैट्समैन इतने ज्यादा एग्रेसिवली खेलता है तो बैट्समैन के पास बड़ा कम चांस होता है। और जब रिस्ट स्पिनर की बात आती है स्पेशली, तो अगर उनको लाइन एंड लेंथ मिलती है तो अपनी टीम के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं, लेकिन रिस्ट स्पिनर्स को पिटाई भी बहुत उतनी ज्यादा पड़ती है। तो आई थिंक जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो ये थी कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने इनिशियली गेम हमारी टीम से ले लिया था। राइट, एंड इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? I think the bigger question is, have we seen the last of Kuldeep Yadav? That's been my worry, because the way he was introduced in the last game when he played for India last, after a long absence of nearly more than 2 years, I think that was the time. Everybody said, there were so many stories in the media also. We all knew what was happening inside. And especially with the bowler who was so versatile, who was so, effective till 2019. So suddenly what happened to this Kuldeep Yadav? So after that, it was, as I have always believed, that you are as good as your captain, wants you to be. So something must have happened, and after that I think there is a loss of confidence. There is absolutely, it's not the same Kuldeep Yadav who was so confident and who was so effective. And right now मुझे लगता है कि मुझे इसलिए भी आज डर है जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग किया, क्योंकि आज उनको पूरा मौका दिया। मैं पहले ये कह रहा था कि उनको कब बॉल करवाएंगे। आज जब उनके लेफ्टिस्ट खेल रहे तो उनको बॉल करवाई, उसके बावजूद भी उनमें ना तो वो जो कहते हैं ना एक जोश दिखा, ना वो स्पार्क दिखा। तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे आज, मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, कहीं हमने लास्ट ऑफ कुलदीप यादव ना देखा हो। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट समवेयर मुझे लगता है वो खुद भी डिसअपॉइंटेड होंगे। और चाहल के बिना की जगह पर आए थे, चाहल को बहुत ज़्यादा बैकिंग है कैप्टन की, तो मुझे थोड़ा डर। इनफैक्ट अगर उनका हम अपने लिसनर्स को बताएं भी, आज जो उनका पूरा इकोनॉमी रेट रहा है, जब उन्होंने बोल किया ही थ्रू अ 9 ओवर का स्पेल जिसमें उन्होंने 68 रन गिव अवे किए, एक भी विकेट नहीं लिया, और इकोनॉमी रेट उनका रहा 7.6, जो बहुत एक्सपेंसिव अगर ओडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक और बॉलर या फिर कह लो ऑलराउंडर जिसकी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इनफैक्ट आप दोनों से, वो है कृणाल पांड्या। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे लिसनर्स जुड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं कि उनको क्या कहना है। गुड इवनिंग। हाय। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। जी मैम नमस्ते, मैं रीमन बोल रही हूँ, गांव खेदड़, जिला हिसार, हरियाणा से। नमस्ते रीमन जी, आपका क्या सवाल है या आप क्या कहना चाहती हैं, बताएं। मैम सबसे पहले तो ऑल इंडियंस को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन ये मैच जीतने के लिए। शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो एट द गुड विन। जिस तरीके से एक सेंचुरी के बाद में जो विकेट लिया कुलदीप जी ने, उनको मतलब एक मैच को पलट के रख दिया। स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि ये वनडे है ही नहीं, हम T20 मैच सुन रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कुलदीप यादव की आप बात करिए स्टार्टिंग में, बिकॉज सबसे पहले तो जिन्होंने विकेट लिया था, हाँ वो प्रसिद्ध थे, जिन्होंने विकेट चटकाया था। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से कुलदीप ने दोबारा से एक विकेट लिया था, कुलदीप ने आज कोई भी विकेट नहीं लिया है मैडम, सो सॉरी टू अपडेट यू ऑन दैट। बेसिकली जो विकेट टेकर्स रहे हैं वो उसमें से एक डेब्यूटांट था प्रसिद्ध, जिनकी हम बात ही कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर और कृणाल पांड्या। कुलदीप यादव आज विदाउट अ विकेट रहे, बट बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक और कॉलर को लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश भारत से, जिला लखीमपुर खीरी, तहसील पलिया कला, ग्राम बिशनपुरी से बोल रहा हूँ सर। मैं नेपाल
भारत नेपाल के बॉर्डर है ना सर, हम वहाँ जी। से बात कर रहे हैं जी। क्या बात। ओके, क्या बात है, इतने दूर से लिसनर्स हमें सुनते हैं। कैसा लग रहा है आपको, भारतीय टीम मुकाबला जीत चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम 10 साल से करीब करीब 10-11 साल से ट्राई कर रहे थे, आज पहली बार क्या जाके बात है। लाइन लगाया। हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर। क्या बात है, भारतीय टीम जब जीती है तब आपका कॉल लगा, ये भी आपके लिए एक फॉर्च्यून की बात। कोई आप क्वेश्चन रखना चाहेंगे हमारे गेस्ट के साथ? सर सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे जी, थैंक यू। कि आप लोगों ने हमारा नंबर को उठाया, और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, ये तो और भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली, जी, और इसके लिए और खुशी के मारे कुछ कहा नहीं जा रहा सर। बाकी और जी, तो नए फिर खिलाड़ियों शुक्रिया को आपका, जिनको- हमें कॉल करने के लिए भी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। एंड then of course our callers coming in expressing their happiness at the day that we have witnessed today. Of course a very good comeback by Team India over there. But now moving on, and जो मैं सवाल पूछ रही थी वो था कृणाल पांड्या का, जो मैं पूछ रही थी। एंड ये डेब्यूटेंट थे आज, इन्होंने ना सिर्फ बैटिंग में एक अच्छी पोजीशन आज दिखाई इन टर्म्स ऑफ हाउ ही प्लेड एंड गॉट द क्रूशियल रन्स फॉर अस 58 ऑफ 31 बॉल्स, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बॉलिंग भी आज अच्छी करी। उसके ऊपर लूथरा जी आपके क्या टेक है? देखिए, इससे अच्छा ड्रीम डेब्यू आपका नहीं हो सकता। बॉलिंग में शुरू में थोड़ा रन भी पड़े, थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखे, लेकिन ओवरऑल उनके जो स्प्रिंग था ना, जो कहते हैं कि जब आपकी चाल में ये सब दिखता है तो वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है। वो कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आउट ऑफ द गेम है या कहीं पर थोड़ा सा ढीले पड़े हों। उन्हें मालूम था कि ये मेरा दिन है, और जिस तरह से कमबैक भी किया, जिस तरह से बॉल भी करते रहे, कैप्टन ने हमेशा उन पर विश्वास भी दिखाया। और मुझे लगता है एक ऐसा दिन, एक ऐसा वक्त जब दो भाई इकट्ठे खेल रहे हैं, इस टीम में भी और उस टीम में भी, एक बड़ा अलग सा स्टीव वॉ मार्क वॉ का एक टाइम हमें नज़र आता था, लेकिन ये एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है। एक फैमिली से इतना टैलेंट निकल के आ रहा है, और ये सब कुछ जो मुझे लगता है कि T20 की कुछ एक ऐसी भी देन है कि जिसमें प्लेयर्स, बहुत फ्रिंज प्लेयर्स भी बहुत ऊपर तक गए। और इरफान पठान के जब भाई आए थे, जब यूसुफ पठान, वहाँ से शुरुआत हुई थी ये। तो ये देखिए एक एक्साइटिंग टाइम है। आप ड्रेसिंग रूम में बड़े प्लेयर्स के साथ रहते हैं IPL के, और फिर जब ऊपर आते हैं तो आप ओवरऑड नहीं होते कभी भी इस सिचुएशन में। आप हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए नज़र आते हैं। तो आज का दिन तो उनका था, और अगर मैन ऑफ द मैच भी अगर मुझे कोई कहे तो मैं शायद उनकी तरफ जाऊंगा, जबकि दूसरे भी कंटेंडर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस से गब्बर भी कहा करते थे कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और वही कॉन्फिडेंस से आज की तारीख में विराट कोहली अपने गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को ये कहते हैं, जब भी उन्हें इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए होते हैं, ये 2 विकेट मुझे दे दे ठाकुर, और ठाकुर निकाल के देता है उनको विकेट। जया, यही कहानी रही है शार्दुल ठाकुर की पिछली 3 मैचेस की। अगर आप बात करेंगे, 2-2 विकेट्स उस क्विक स्पैन में निकाल के, और ऐसे टाइम पे विकेट दिखाते हैं जो वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है भारतीय टीम को, वहां से मैच निकाल के देता है। ऑफ कोर्स यही मैंने पहले बात बोली थी कि शार्दुल ठाकुर, आई मीन जब हम पहले बात कर रहे थे तो भुवनेश्वर और शार्दुल की बात हम कर रहे थे, क्योंकि शार्दुल वो दर्शाते आ रहे हैं, पिछले कुछ मैचेस में दर्शाते आ रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं मैच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल, उन्होंने वो जो स्पेल डाला, ऑल्दो 6 ही ओवर डाले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाली और की विकेट्स निकाल के दी, आई थिंक अनइमेजिनेबल। और आई थिंक टीम इंडिया इज ऑन अ ड्रीम रन, एंड इट्स गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट। यस, एंड लूथरा जी मैं यहाँ पे ये पूछूंगी कि हमने देखा कि सेकंड हाफ में ये बात होती थी, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट मैच पे प्ले करेगा, इंग्लैंड ने जीता, उन्होंने पहले फील्ड करने के लिए चूज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और भी देखी, वो ये था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने फील्ड किया, सेकंड हाफ में क्या आपने डू का कोई भी यहाँ पे ड्यू का एंगल होते हुए देखा? बिकॉज आउटफील्ड इतनी फास्ट थी कि इट वॉज अ गुड आउटफील्ड टू चेज द टारगेट दैट वाज गिवन। देखिए, अगर हल्की फुल्की ड्यू हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बॉल कहीं भी पहुंचते हुए नज़र नहीं आए, कभी एम्पायर की तरफ नहीं गए टॉवल लेने। तो मुझे लगता है जो कल जो बारिश का फैक्टर था उसकी वजह से ड्यू होगी, मुझे लगता है वैसा कुछ नहीं हुआ। और वही चीज़ मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ईजी भी हुई। मिडल ओवर्स में जब आपको रन चाहिए थे, जब आपको विकेटें चाहिए थी, आप ले पाए क्योंकि बॉल को ग्रिप कर पा रहे थे। And that was, I think, a very, very crucial point. In fact, we also have the post-match press conference happening now, so let's take you there to make you listen to what both the captains have to say. So I think we've done a lot of things right today. I thought the bowlers were outstanding. I thought the wicket was brilliant as well. It really did bowl for an entertaining game. I thought there was a bit more on offer for the seamers, but again, if you got yourself in, there was plenty of reward for the batsmen. Our 2 openers were outstanding. They have been for a long time. The way in which they play have been absolutely brilliant, and we failed to continue building on that.
I think when we have bad days with the bat, obviously it can potentially look worse than it is, but we play in an aggressive brand of cricket. We just need to get better and upskill a little bit more and execute better than we did today. But India played really well again, fought their way back into the game and thoroughly deserved to win. You bat till number 9. Tom Curran comes in at number 9, and he's a very, very good batsman. So, in a way, is it a bit of complacency factor creeping in? Because you know everybody can bat, so you want to bat in that way? Does it backfire sometimes? No, I don't think so. I think, well, when you look at our top 7 in particular, all have scored, under 60 ball hundreds in international cricket. It's something that we pride ourselves on, being able to take the attack to the opposition, and that's the way that we want to play. White ball cricket, as a general rule, is always on the upward slant. Scores, total scores, individual scores, strike rates are always increasing. And with one eye on the World Cup, we want to continue to try and push the envelope in that regard, to try and take our game forward and always look to learn. Sometimes, again, that doesn't work because we don't get it right. But for us, losing like that is way better than losing by 10 or 20 runs, playing in a completely different manner that doesn't suit us. This is the way we play, and this is the way we'll continue to play. That's interesting when you say that, because after your World Cup victory, you wouldn't say that the results have exactly gone your way. And also looking to a World Cup, which is in 2 years' time, do you feel this is the way you're going to go, irrespective of what happens? Yeah, I think the game has always moved forward. I think sport in general has always moved, technology has moved the game forward, fitness levels have moved the game forward. In our case, sometimes bats have moved the game forward. So we need to push as hard as we can in order to try and continually improve. It's great to have a lot of the senior guys here playing in this series. As given the opportunity, we don't normally have them here. So it's important for us to dictate the way that we play and reinforce over the last 5 years that the method that's worked for us. You mentioned that the wicket was very good, and also there's a little bit of dew right now. So were you happy with what India posted, 317? Yeah, we were. I thought the bowlers did an outstanding job. The traditional test length and line really did prove effective on this wicket throughout the whole game regardless. So yeah, we were happy chasing 318. Did it change under lights? Well, we probably didn't play well enough to take advantage of any change, to be honest. There is a little bit of dew here, but we weren't in a position to play well enough to take advantage of that, which is disappointing because obviously you win the toss, and here in India it is a little bit of an advantage. Would you change anything going forwards? Just the execution. I think the method in which we're trying to play is definitely the right one. Like I mentioned, trying to progress things and move things forward. I thought the bowling was outstanding. India set things up right for the end and scored, in and around par, maybe sub-par score. But our batting from the middle order down needs to improve. Thanks for your time, Owen Morgan. Thanks, Captain. Thank you very much. That was the England captain, Owen Morgan. It's now time for the ACC Kamal Ka moment. The winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh. And this award goes to the debutant, Krunal Pandya. Got to his 50 in pretty quick time. Fastest 50 ever by a debutant. Of 26 deliveries, 58 of 31, 7 boundaries, 2 sixes. Added a lot of impetus to the Indian batting. Really well played. That was his 50 moment. Very emotional right through the day from the time he got his cap. And what a moment. Also capping it off with a wicket while he bowled. Yeah, up next is the Dream 11 Game Changer of the Match Award. The winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh. And this award also goes to the other debutant today, Prasidh Krishna. Took a bit of tap in the 3rd over, but then broke the partnership between the openers and then getting the wicket of Sam Billings and Moeen Ali as well. That was the first wicket of Jason Roy. And just the way he came back was exceptional. Getting Ben Stokes, and just the strength of character after going for 22 runs in that 3rd over. I also have the captain Virat Kohli next to me. Very happy, man, with what happened, 135 for no loss, and then to come back the way you did. This is one of our sweetest victories in the recent past. We haven't won many good games in one-day cricket recently, but
I think this one is right up there with any other, purely because of what you just mentioned, 135 for one, and then getting 9 wickets in the next 16 runs is something outstanding. And a comeback from all our bowlers, starting from Prasidh, actually, going for a few runs early on, everyone did. But then to come back into the game like the way they did was an amazing effort. Krunal as well, 35 plus in the first 3, and then to come back and bowl 10 overs under 60 and get 1 wicket was amazing. Shardul was amazing. Bhuvi was amazing. So, yeah, look, I'm a really, really proud man right now. The team showed great character and intensity out there. You can imagine, look, you have got the likes of Bumrah to come, Mohammad Shami to come, Ravindra Jadeja not there, Akshay Patel is not there. So it seems as if the riches are in plenty, and as a captain, it's sometimes you're wondering, what do I tell the guy? I need to drop somebody or I need to pick somebody. What do I tell them? Well, look, as I mentioned in the past as well, we promote players who have intent to go out there and keep backing their skills and do the job for the team. Special mention to Shikhar's inning today as well. He hasn't gotten game time recently. Didn't get many in the first T20 and then batted beautifully today. KL as well, back amongst the runs. So again, as I mentioned, we want to back people who we know that are going to go out there and do a selfless job and do what the team requires them to do. So yeah, from that point of view, it's a healthy competition, I would say, between everyone. For every slot, we have 2-3 players available and ready to take the field anytime. And there's great signs for Indian cricket. And the system which the management has created in the last few years, discussions with our senior players as well. We want to go on the right path, and right now I feel that we are, and we have a big pool of players to choose from. Since you mentioned the management and you also mentioned about Shikhar Dhawan, somebody as senior as him gets one game and doesn't get to play, the lines of communication have to be pretty open, isn't it? Because somebody might feel, oh, I'm not playing. So the clarity in thought process and what you relay to them is of paramount importance, isn't it, Virat? Totally. And again, a special mention to him. His body language was amazing when he wasn't playing. He was so helpful sitting on the bench, urging, really, really motivating our players on the field, and then, running with the extra stuff, with water and whatnot. So I think he's been outstanding. He's worked hard on his game, and today he deservedly got the result that he ended up achieving and made a very important contribution, for the team's cause, because it was a bit tricky to start on. You saw the openers had to really play themselves in and play proper cricket, so that partnership was crucial. Then we got a 100-run partnership, and then we lost a few wickets. So from that context, I think his innings becomes even more important because he batted in the most toughest phase and got a 95, which I think is much more valuable than what is shown on the scoreboard. Yeah, it was interesting listening to Owen Morgan when he said that possibly India was subpar. Would you agree with that on this surface? Well, yes, it could be. I mean, look, the ploy was when we got to a 100 partnership, my game plan was clear. I was playing well. I got off to a start. I was seeing the ball well. So I told Shikhar, look, from 31 to 40, I'm going to take the bowlers on. It'll give us a chance to get to 340, 350 maybe with the power that we have at the back. But then I got out and then 2 more breakthroughs. So we were pushed back a little bit. But then Krunal and KL, that last 10-over period was outstanding. Got us right back into the game. So yeah, it's a fair assessment. We probably, if I stayed in till the 40th over with Shikhar, we probably would have ended up with 350 plus, and I felt like the wicket was getting better and better to bat on as the ball got older, and under lights as well. It was coming on nicely onto the bat. You saw that in the first half, and when they were going after our bowlers, some amazing shots of good deliveries as well. So yeah, I feel like they're going to be high-scoring games, and we'll look to capitalize and get those extra runs in the next one. Thanks for your time, and really, really well played, Virat. Thank you. The Indian captain, Virat Kohli. Now it's time for the Paytm Man of the Match. The winner will digitally receive the prize money of ₹1 lakh through the Paytm UPI transfer and also gets a trophy. And the man of the match is Shikhar Dhawan. 98 of 106. Missed out on his 100. 11 boundaries, 2 sixes. And as Virat mentioned, batted during the toughest period. There could have been other contenders as well, but Gabbar is our man of the match. Shikhar, thanks for your time. Must be a very happy man. You've not had enough game time, as Virat mentioned, and to play the way you did today. Yep, absolutely. I'm very happy with the performance, and more than that, our team won this match. So it was a great comeback from us, and really enjoyed it. And yep, absolutely. I was
putting all my, putting all my efforts in my process. I was doing good gym sessions, running sessions, and net sessions whenever it was possible. And yeah, eventually my smart work paid off. You mentioned the smart work. What was it batting in those early periods? Because Sam Curran got the ball to move a bit. Yeah. Mark Wood obviously was bowling with a bit of pace and got the ball to nibble around. What was your thought process along with Rohit Sharma? Yeah, it was, we knew that ball was swinging and seaming as well. So we knew that we have to stay on the wicket and play close to the body and not to rush in. We knew that we can score runs later on, and that's what happened then. Yeah. Your trademark shots on the offside, a couple of cuts and full short arm jabs. Yeah. How did it feel? I know you didn't showcase too much of your emotions, but you must have been really pained getting out not really. On 98. You feel a bit sad. I'm not a person who gets too sad or too happy. I played good shot. I wasn't in a rush to score 100, and I was just playing in that rhythm, and unfortunately it went in the hand, so it's all right. There's always the next time. Yeah. You're one of the... Well, a very, very happy Virat Kohli out there. Of course, he has all the reasons. And given the fact that even Shikhar Dhawan, the man that the captain also kind of bagged today. And along with that, Shikhar Dhawan also expressing his happiness at the fact that he was able to get support from the other end also. Luthra ji, your take on that? I think Shikhar has always been a very impact player, right from the first innings, if you remember, 180 plus at Mohali. I think he has always shown that courage to play shots and also play it with, full authority. But in between, yes, there was always a slump in everybody's career. But I think he's playing very solid cricket right now. Back-to-back centuries also, and then also this 98. There is always a next time, as he was saying, he can always score centuries. But again, he's competing with some of the very best talent, right now, against Prithvi Shah, against KL Rahul also coming, later in the order, and also Shubman Gill. So he has to always be on his toes. He is no more younger. He is competing with very, very talented youngsters. और जया ऑयन मॉर्गन ने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दी कि हम लोग आज जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी वो चीज़ें कर नहीं पाए. आप हमारा टॉप ऑर्डर देखिए, टॉप के जो 7 बैट्समैन हैं उन सब ने 100 स्कोर किया विद इन लाइक 60 और 70 डिलीवरीज, बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन इतना अच्छे से उनका हो नहीं पा रहा है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट एज ए प्लेयर कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए? Actually, that is the difference between win and lose. That's how it is, and because plan सभी करते हैं, but उस planning को हर एक stage पे execute करना, हर एक situation में execute करना, वो जितना ज़्यादा आप close to percentage जितना उसको execute well करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा departments में करोगे, be it fielding, be it bowling, be it batting, so आप उतने ही close जाओगे आपके result के. सो आई थिंक यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इंडिया एंड इंग्लैंड में यही आ रहा है कि जहाँ पे ज़रूरी है वो एग्जीक्यूशन, वहाँ पे इंग्लैंड कहीं शायद लैक कर रही है, बट अदरवाइज ऑफ द different stages of the game they are unbelievable. Yes, of course. And मैं यहाँ से यही पूछूंगी कि after the day ended today, of course it was a good target that the Indians put on board. England could have chased it as Owen Morgan said, लेकिन not to the full capacity they could. आने वाले दोनों remaining ODIs के अंदर what is the 2 things that you think that the English team especially going to take away from today that they would need to work upon? I don't think there will be some different pitches for the next two games. It's the same stadium and similar kind of pitches. Little bit grass on it and very firm, But important thing which their captain also said, that we were almost like very certain about chasing this kind of score. They were very happy that they have restricted India. So their bowling game plan, as Jaya was saying, as they have executed it well. But somewhere in the batting lineup and especially in the middle order, I think they have lost this game. It collapsed. So it has been collapsing, throughout the series. Yes. It's been a worrisome problem for the entire English touring team, and somewhere they have to sit down after this particular series and they have to look back and do a lot of corrections in this. If they have to win another T20 World Cup, and they are the regaining champion in one days. True. So that's it. जया, जो सेकंड मैच है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बट इंग्लैंड के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट आप गंवा चुके हैं, T20 फॉर्मेट आप गंवा चुके हैं. अब अगर वनडे में आपको सस्टेन करना है तो यू नीड टू विन दिस मैच.
Of course, I mean, उससे ज़्यादा important ये है कि the brand of cricket that we are seeing right now, it has to be, the series should be alive. I mean to say. और अगर इंग्लैंड अच्छा करती है तो आई मीन देयर इज अ गुड कॉन्टेस्ट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ सो आई थिंक वी एज अ फैन वुड लव टू सी दैट Yes, of course, two more ODIs remaining in this three-match ODI series between India and England. We finished the day on a happy note. Indians winning the game today comfortably by 66 runs, and England, of course, not being able to chase the target out there. 251, they finished off completely. And on that note, I would like to thank our experts, Chandrasekhar Luthra and Jaya Sharma, for joining us in the studio. Thank you so much. Thank you. And Ayush, always a pleasure. Thank you so much for joining me over here, my dear. Thank you. And on that note, to all our listeners, good night, stay safe, stay healthy. We'll catch you in the next game in the second ODI. Till then, it's me, Sakshi Mandwal, wishing you all a very good night. Bye-bye. Man of the match. प्रस्तुत करता प्रवीण चंद। अभी आप द